Hello, good morning. Today we start meaning and methods of research methodology. Uh, First of all, arise question: what is the research? If we see in words properly, the research is a systematic investigation to find answer to a problem or question, or it's a way to generate new knowledge or validity existing knowledge. A question arises that why we start research. So you see that in first line we are saying research is a systematic investigation to find answer to a problem or question. Uh, you know, when you are free, when you are doing something, you have surrounding so many questions, so many queries. A simple man also direct or indirect way use research, but when we are systematic uh, findings, then we have need research methodology. Suppose you think कि your brother is why getting less percentage although he is doing too much efforts and so on, then you are search minimum points doing some minutely study that where he lose, कहाँ उसकी कमियां रह रही है. तो your mother start his habits check, and then you note that he is doing very well, he is very hard worker, but in his habit he is not learn, he is only do the study and put it inside, he is not doing research, doing revision so many times. Then your mother says him, बेटा आप इसकी जो है रिवीजन करें, राइटिंग हैबिट डालें. तो इट्स ए सिंपल, it's a very simple, each and every person have required research methodology because everyone surrounded by various type of questions. That's why we say research is a systematic investigation to find answer to a problem or questions. We all are surrounded so many problems, but because you are professional student, then maybe possible you are marketing student, maybe possible you are production manager, maybe possible you are scientist, then you do the research in your side. ठीक है ना. इफ यू आर सेल्समैन, देन आप देखेंगे कि सेल्स कैसे इंक्रीज की जाए, क्या उसमें रिनोवेशंस किए जा सकते हैं, देन यू पुट द आंसर इन योर bosses. So research is a simple systematic investigations to find answer to a problem or question. Then there are various type of research: basic research, applied research, quantitative research, and research methodology. The systematic approach to conduct research involves so many. Defining the research questions. First of all, you define your question in your mind and then you write it on paper or on your computer. So first of all, question is very important. Then choosing the research design आफ्टर कैसा रहेगा, क्योंकि देर नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे रिसर्च डिजाइन. देन कलेक्टिंग डाटा, हाउ टू कलेक्ट डाटा, आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी, और आल्सो वी डिस्कस collecting data, how to we collect the data, we will discuss in next chapter. To collecting data, because data collection is a very important role play in best result. If your data collection is not proper and not scientific way, then your research will be wrong. Sometimes you see that we are saying that Mr. this MLA will be win and result against the MLA. Okay, we think कि इस बार इलेक्शन में इतनी सीटें आनी चाहिए, लेकिन सीटें नहीं आती. लेकिन किसी एक्स जो है
आपका न्यूज़ जो फॉरकास्ट कर रहा है तो उसके करेक्ट जाते हैं तो वो कहते हैं कि आवर रिजल्ट इज 99% करेक्ट. सेम वे इन स्टॉक मार्केट आवर 99% accuracy, some is saying our 80% accuracy. Then how they say that our 99%, because they have proper data collection method. So collecting of data is the play main role in our research methodology. How do you collect the data? It's the main role. आप कहीं पे भी देख सकते हैं कि आप सपोज करिए कि आप अपना बायोडाटा भी डालते हैं तो आप उसके अंदर देखिए कि आपके लायक कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कलेक्ट द डाटा कि विच इंस्टीट्यूशन इज बेटर फॉर यू, ओके, अकॉर्डिंग टू योर नीड. तो डाटा कलेक्शन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. देन एनालाइजिंग द डाटा. देर आर सो मेनी मेथड्स टू एनालाइज द डाटा. वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक. Then interpretation the results. It's also play very important role, interpretation the result, because you know कि result जो है बेटा वो सिंपल और शॉर्ट एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. आप सुबह न्यूज़पेपर ओपन करते हैं, ओके, एंड देन यू सी दैट, सपोज करिए कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप एमबीए के स्टूडेंट हैं. देन आप देखते हैं कि एक सिंपल न्यूज़ आई है कि टुडे मे बी पॉसिबल गोल्ड गोज higher and higher level. Okay, all supports may be possible today gold breakout. अब आपने उस एक लाइन को देख करके एक कंक्लूजन निकाल लिया कि गोल्ड गोज हाई हाई हाई. लेकिन जो ये लाइन जो आपने हेडलाइन देखा है न्यूज़पेपर का, इस हेडलाइन के लिए रिसर्च कितना लगा होगा. सो मैनी, मतलब रिसर्च इज डन. मे बी पॉसिबल यूक्रेन रूस वार है, देन डॉलर डाउनफॉल है, ट्रम्प पॉलिसीज है, चाइना पॉलिसीज है. वी आर ओनली see only one headline, maybe possible gold goes $5,000, okay, and we take the decision we will buy the gold. तो जिसने रिसर्च किया है उसने उस डाटा एनालिसिस के ऊपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क किया. देन आपको इंटरप्रेट किया सिंगल लाइन में एंड यू आर अंडरस्टैंड, okay. Then interpretation of the result play very important role in research. Next, validity of the research, okay, because without validity your research is useless. रिसर्च वैलिड एंड रिलायबल होना चाहिए. उसमें लगना चाहिए कि हाँ कि आपने जो वर्क किया है वो ओरिजिनल है. लाइक सपोज करिए कि मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि सर का अपना ओरिजिनल वे है, मे बी पॉसिबल कि मैं अगर चुरा करके बोलूँगा तो आपको लेक्चर में मज़ा नहीं आएगा. तो ठीक वही वे होना चाहिए कि रिसर्च जो है वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए. उसके ऊपर आपको शो करना चाहिए कि हमने डाटा कलेक्ट किया, तो हाउ टू वी कलेक्ट द डाटा, सोर्सेज क्या है, वैलिडिटी क्या है, एंड कितना रिलायबल है. तो जितना आप इसके अंदर डेप्थ में जाएंगे तो आपकी एरर्स मिनिमाइज होगी. देन ऑलवेज रिमेंबर, रिसर्चर्स ऑलवेज बेटा बायस्ड फ्री होना चाहिए, बायसनेस नहीं होना चाहिए. बिकॉज बायसनेस जो होती है वो आपकी रिलायबिलिटी को खत्म कर देता है. तो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है, जो हम वी अडॉप्ट करेंगे, इट्स हेल्प टू मिनिमाइज एरर्स एंड बायसनेस, ठीक है ना, एंड अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट step to research process, identify the research problem. First of all, what you want to do the research, okay. First of all you think what is your area. Suppose kariye you are a farmer, okay, then maybe possible your research on seeds, maybe possible crop, okay.
First of all, you define, identify your research problem. Okay, you are scientist, may be possible आप केमिकल साइंटिस्ट हैं, मे बी पॉसिबल आप फार्मा साइड के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल you should decide your research problem. Okay, then review the literature. रिसर्च स्टार्ट करने से पहले आपको जो क्वेश्चन माइंड में जो आपके क्रिएट हुआ है उससे रिलेटेड आपको लिटरेचर स्टडी फर्स्ट ऑफ. देखिए, कोई भी रिसर्च बेस्ट कब होगा, जब आपके पास पास्ट का नॉलेज हो और व्हाट हैपेंड इन फ्यूचर, इन सब का आप नॉलेज रखेंगे, देन रिसर्च का जो रिजल्ट आएगा वो बहुत रिफाइंड आएगा. तो रिव्यू, लिटरेचर, मैक्सिमम स्टडी करिए. आपको मतलब आपको मैं बताऊं कि जो फॉरेन में रिसर्च करते हैं, इवन 50-50 ईयर्स तक तो वो फॉरेन में इस कंट्री उस कंट्री, इधर गए उधर गए, वहाँ क्या हुआ, ओरिजिनलिटी देखते हैं. लाइक आप देखते हैं ना, कई बार हवेलियों की स्टडी के लिए आप, मैं सोच नहीं सकता हूँ कि बीकानेर का हूँ मैं, तो यहाँ पे एक फॉरेन की लेडी आई हुई थी, वो 30 साल तक तो बीकानेर की हवेलियों के अंदर घूमती रही, एक एक नक्काशी, एक एक मतलब हर चीज को माइन्यूटली देखती रही. तो आई एम सरप्राइज्ड कि ये इतना रिसर्च में टाइम लगा रहे हैं, बिकॉज वो प्रॉपर स्टडी करना चाहते हैं. तो रिव्यू लिटरेचर, क्योंकि आप जो रिजल्ट देंगे वो सोसाइटी पे इफेक्ट आएगा. सपोज करिए कि आपने एक वैक्सीन बनाई, ओके, और अगर विदाउट रिसर्च, विदाउट इफ्स एंड नॉट्स आपने उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. दैट्स व्हाई वी से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टडी द लिटरेचर्स. ओके, देन आप नया डाटा कलेक्शन करिए, देन फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चंस. देन आपके दिमाग में वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने चाहिए. क्वेश्चनरी, हाउ टू प्रिपेयर द क्वेश्चनरी, वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक. ओके, देन हाइपोथेसिस, इट्स ए मेजर पार्ट, हाइपोथेसिस. ओके, देखिए हाइपोथेसिस वो चीज है जो आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है. न्यूटन का अगर हम सुनते हैं तो वो गार्डन में तो बैठे थे, ओके, और उनके ऊपर एक एप्पल आके गिरा, और उस मात्र एक एप्पल के नीचे गिरने से उनके दिमाग में क्या कुछ नहीं आ गया, एंड दे गिव यू ग्रेविटी थ्योरी. ओके, और आज पूरी दुनिया ग्रेविटी थ्योरी के ऊपर डिपेंड करती है. तो बेटा ये जो है हाइपोथेसिस जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. वी आल्सो डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर. ओके, डिजाइन द रिसर्च, कलेक्ट द डाटा, हाउ टू कलेक्ट डाटा, वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक. देन इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट एंड रिपोर्ट फाइंडिंग्स. नेक्स्ट, research design. Research design simply the blueprint of the research process. Okay, experimental design, survey design, case study design and so on. तो ये जो है इसको हम सभी टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे. Then data collection method. Okay, there are so many ways of data collection methods, survey and questionnaires. Okay, सर्वे एंड क्वेश्चनरीज को हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे. स्लाइड में आपको बता देता हूँ. क्वेश्चनरीज, वी पुट अप द सो मेनी क्वेश्चंस. ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चनरीज. जनरली easy way is that A, B, C, D and yes and no. Okay, if you have so many options, then you put question and then give the option A, B, C, D, and sometime only be yes and no. Like suppose you want to do the research survey. Okay, sorry, survey. How many people are use OTT and like the Netflix. Okay, so it's very easy. You put your different questions. Are you like the Netflix? Are you see the Netflix? How many times? How many hours? Or how many minutes you are seeing the Netflix? Okay.
then yes and no, yes and no, yes and no. It's a very easy. Then question the ABCD. If you have so many questions, so many queries regarding Netflix, okay, then you put ABCD. Sometimes we are giving the weightage, a a option का weightage, B का weightage, so many we will discuss in next topic. Then interviews, okay, तो इंटरव्यूज से हम डाटा कलेक्शन करते हैं, हाउ टू कलेक्ट हम डिस्कस करेंगे. देन ऑब्जर्वेशन, देन सेकेंडरी डाटा इज डाटा ऑलरेडी पब्लिश्ड एंड वी यूज्ड अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. Next is sampling technique. It's a very important part of the research methodology. इसको हम बहुत डिस्कस करेंगे. अभी तो इसमें सिंपल इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, तो मैं स्लाइड बोल करके ख़त्म करूँगा, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, तो प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इट्स रैंडम सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. वी विल डिस्कस हाउ टू कलेक्ट द रैंडम सैम्पलिंग, सो मेनी मेथड्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग. ओके, देन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसको भी हम डिस्कस करेंगे. इट्स वे the sampling is very important part. How to use the sample? If you not proper sample use, then your research is useless. Suppose you go to market and you want to purchase apple 2 kg. ओके, देन समटाइम्स लाइक आप लोग आजकल अनुभवीहीन होते हैं एंड शॉपकीपर जो है आपको एक बढ़िया सेव आपको शो कर देता है कि देखिए ये, एंड आप उसको कह देते हैं ठीक है 2 kg पैक कर दीजिए, और घर जाते ही जो है आपकी मदर आपको डांट लगाती है क्या एप्पल उठा के लिया है, बिकॉज आपने प्रॉपर सैम्पलिंग नहीं करी. जनरली हम जब जो है टूरिस्ट एरिया में घूमने जाते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लाइक वैष्णो देवी घूमने गए, तो हम सब वहाँ से अखरोट परचेज करके लाते हैं. देन जो हम वहाँ पे अखरोट देखते हैं वो तो फाइन क्वालिटी का, और जो हम पैक करके घर पे लाके खोलते हैं प्रसाद लोगों को देने के लिए, तो पता लगता है कि आधे अखरोट तो ऐसे आ गए जो किसी काम के ही नहीं है. तो बेटा सैम्पलिंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड हाउ टू चूज द sample we will discuss in next topic. Random sampling, in simply if I say all the units item have equal chance to make a random sampling, but how to choose it we will discuss in next question. Okay, and convincing, purposive sampling, all these we discuss in next slide. Then data analysis, it's a quantitative analysis, descriptive statistics, and qualitative analysis, contact and thematic analysis we will discuss in next topic. And validity. Okay, does the research measures what its claim to measure? Reliability, are the result constant and accurate? It's you check it. इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज एक सिंपल अगर आपने लाइन कह दिया है, सपोज करिए कि आपने कोई मेडिसिन प्रिपेयर करी है, आपने उसकी एक्यूरेसी चेक नहीं करी है, तो उसके फर्दर इम्पैक्ट हमारी पूरी जनरेशन पे आएंगे. आपने किसी के बारे में कोई स्टेटमेंट दे दिया है विदाउट रिसर्च, तो उसका इफेक्ट क्या हो सकता है कि हम सोच नहीं सकते. तो हमेशा ध्यान रखिए कि रिसर्च के अंदर एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, ये सब होने बहुत जरूरी है. तो कैसे होते हैं, इसके वेरियस मेथड है जिससे हम बेस्ट चेक करते हैं, एंड मिनिमम स्टैंडर्ड डिविएशंस होना चाहिए. We will discuss in next slides. Then beta ethical consideration, inform confidently. बेटा ये सारे जो पॉइंट्स है ये रिसर्च के पार्ट हैं. बेटा
Then we will discuss next topic in next slide. Thank you for everyone for listening me. I hope you understand and you like my lecture. Okay, thank you, thank you. हुआ बंद किया। जैसे वो यहाँ पे ना स्टॉप